हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी फिर से हम कुछ ट्रेड्स देखेंगे। सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल, ये लाइव ट्रेडिंग के हम कुछ सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लाइव ट्रेड्स प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। सो लेट्स सी, अभी संडे है एंड क्रिप्टो मार्केट अभी चालू है। 23rd of July is the date and time is 8 a.m. in the morning. Currently Bitcoin is trading at 29,890. इथेरियम चेक कर लेते हैं, इथेरियम भी 1873 पे ट्रेड कर रहा है। पुराना चार्ट देखते हैं अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो देयर वाज अ बिग फॉल। आफ्टर दैट रिट्रेसमेंट हुआ है, मोर देन 50% ट्रेंड रिट्रेस हो चुका है। देखते हैं अगर हमको ट्रेड मिलता है तो। यहाँ पे इन 45 मिनट्स टाइम फ्रेम लास्ट कुछ कैंडल्स में हमको कंसोलिडेशन दिख रहा है। सो मे बी वी कैन प्लान सम स्कैल्पिंग हियर, बट वी विल वेट फॉर द कंफर्मेशन फर्स्ट, देन ओनली वी विल टेक द ट्रेड। ओके, सो अभी तो कुछ ट्रेड्स दिख नहीं रही है। दिस इज 1 मिनट टाइम फ्रेम। हम एक बार बिटकॉइन पे भी देख लेते हैं। ओके, बिटकॉइन में भी सिमिलर है, कंटिन्यूस डाउनफॉल देखने को मिल रहा है हमको अभी इधर। सो लेट्स वेट। यहाँ पे हम ओके, सो दिस इज डाउन ट्रेंड। यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट ऑलरेडी मार्केट मूव किया है तो पुल बैक का वेट करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे हमको एक एंट्री मिल सकता है शॉर्ट का। सो लेट्स सी, हमने ट्रेड प्लान किया यहाँ पे 1:2 के लिए। 4000 इज आवर स्टॉप लॉस एंड 8500 इज द टारगेट। सो लेट्स सी ये ट्रेड कैसे काम करता है। सो वी आर ऑलरेडी इन द ट्रेड। लास्ट वीडियो के बाद में हमारे नेक्स्ट ट्रेड ये, क्योंकि बाद में मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया था। अकाउंट हिस्ट्री में आई कैन वॉक यू थ्रू द जर्नल। यस, सो दीज वर द लास्ट 2 ट्रेड्स इन द लास्ट वीडियो, यू कैन गो एंड चेक। लास्ट वीडियो में हमने एक ट्रेड लिया था जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया था पार्शली $3000 $5000। एंड उसके बाद में नेक्स्ट ट्रेड हमने आज लिया है। इक्विटी, करंट इक्विटी हमारा 1.1 मिलियन है। एंड लेट्स सी, सो मार्केट अभी भी वहीं हमारी एंट्री प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। हम वेट करते हैं मार्केट का, नहीं तो ओके स्टॉप लॉस को थोड़ा और ट्रेल कर सकते हैं, टारगेट को बेटर करेंगे। बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा मूव हुआ है, सो मे बी हमको एक पुल बैक दिखे यहाँ पे, बट लेट्स सी, वी आर वेटिंग फॉर अ क्विक स्कैल्प। ओके, मार्केट ने मूव दिया है अपोजिट डायरेक्शन में, वी विल वेट फॉर अ स्टॉप लॉस ट्रेड, देन विल प्लान ऑन नेक्स्ट ट्रेड। वही है कि वीकेंड पे मार्केट थोड़ा स्लो मूव करता है, देयर इज नॉट मच एक्टिविटी इन द मार्केट, तो प्राइस मूवमेंट्स भी काफ़ी स्लो हैं। लिक्विडिटी का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है वीकेंड्स में, सो हो सकता है कि हमारा एसएल भी जंप हो, बट दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। वी आर सीइंग कि प्राइस सेक्शन में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। मार्केट बहुत स्लोली मूव कर रहा है, बट लेट्स सी। यहीं पे मार्केट स्टक है, बट लेट्स सी ये कैसे मूव करता है। ओके, सरप्राइजिंगली मार्केट अभी भी वहीं पे स्टक है एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आइदर स्टॉप लॉस टू हिट या फिर हमारा टारगेट हिट करें। सो हम अभी भी वेट कर रहे हैं, अभी भी हम ट्रेड में हैं। वी हैव नॉट बुक्ड एनी स्टॉप लॉस और एनी टारगेट। यहाँ से अगर डाउन मूव मिलता है तो हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर पाएंगे, क्योंकि दिस विल बी कंसिडर्ड न्यू स्विंग, रीसेंट स्विंग। बट लेट्स सी, मुझे लगता है कि मार्केट अगर ऊपर मूव करना होता तो अभी तक कर चुका होता, सो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट विल मूव डाउन। ओके, मार्केट इज मूविंग अप। बड़े टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं। ओके, सो मार्केट स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। नो वरीज, हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करते हैं अभी। फर्स्ट ट्रेड में हमको स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड हम इथेरियम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी हियर। ओके, सो इथेरियम में भी मार्केट इज मूविंग अप। सेम गोज विद बिटकॉइन। हम इथेरियम में कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, हम यहाँ बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट आई विल वेट फॉर वन पुल बैक। अगर पुल बैक नहीं मिलता है तो आई विल नॉट एंटर इन द ट्रेड, बिकॉज रिवॉर्ड टू रिस्क मेरा काफ़ी आई डोंट थिंक कि रिवॉर्ड टू रिस्क अच्छा होगा अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, कि स्टॉप लॉस 1873 पे है, विच इज़ लाइक मोर देन 4 और 5 6 कैंडल्स अवे। सो हम लोग यहाँ पे एंटर नहीं लेंगे, बट मे बी पार्शियल क्वांटिटी के साथ हम एंटर ले सकते हैं। ओके, हम एक काम करेंगे, पार्शियल क्वांटिटी के साथ एंटर लेंगे एंड पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक अगर आता है तो हम और क्वांटिटी ऐड करेंगे एंड स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस स्विंग। सो इन द प्रीवियस ट्रेड हमको 5,500 का लॉस हुआ है।
So let's see this trade. This is second trade for the day. Okay, 1 is to 2 today. 1 point is our stop loss and 2 points is the target. 1975.56 is the target I am looking for. Market is not moving today. It is still stuck there. The market seems to be moving down, and as we planned, we will take more entries here. So we will add the same quantity here, and the stop loss will be the same. This will be the third entry place, 1874.03, and after that we will wait for either stop loss or target to hit. We will not take any further entry. So the idea is, when the market has already moved much, we can take partial entries, and then on every pullback you can add more entries as per your risk capacity. So I'm risking around 1 to 2% of my capital on each trade. So if you see 18,000 and 2 points, so around 2.5% is the stop loss I have for this trade. 2% approximately. So I can add some more quantity to make the stop loss up to 2.5%. This is still trading at 74.24, 74.25, and this is the problem. Trading on weekends, we don't see much movement. It will be either a sharp move, or it will keep on trading on the same price because of lack of liquidity over the weekends. Let's see what Bitcoin is doing. Okay, so Bitcoin is also trading the same way. Okay, both the crypto trades almost the same way, Bitcoin and Ethereum. It's just a matter of price action. If we see some good price action in any of these, we plan to trade in that. I think it is just a stopping candle, and it should move up, but we don't know when it will move. In the high time frame, it is looking good, and we can hold it for upside. But I will keep the tight stop loss. The reason is simple. It is in the downtrend, and it can move sharply down anytime. But this might give some pullback opportunities, and that's where we are trading this to pull back in the downtrend. And in the downtrend, pullbacks are always sharp, so we might get some good points in the upside in these down moves. Okay, it has moved up a little bit, and we are mild green currently, but we are still away from the target. अभी भी वेट करते हैं टारगेट का. अभी भी 1874.67 पे ट्रेड कर रहा है. 1876 हमारा टारगेट है. 1875.51 और 1870.6. तो कोई भी प्राइस हमको मिलेगा तो वी विल प्लान टू एग्जिट देयर. मार्केट थोड़ा और मूव किया है, बट अभी भी टारगेट से दूर. वन बिग कैंडल एंड देन विल बी बुकिंग आवर प्रॉफिट्स. सो वी आर ऑलरेडी इन द ऑलमोस्ट 0.8%, 1% प्रॉफिट. ओके, सो ओवर मूव किया है ये. यहाँ पे वी कैन बुक 50% ऑफ क्वांटिटीज. Oops, I made a mistake and I booked all 100% quantities. Anyways, okay, so let's check the journal if we have made money. Yes, so we have taken two trades and 2 trade लिए आज. First trade में we had a loss of 5400, and in the second trade हमें 1900 का प्रॉफिट हुआ है. So overall we are in profit of 4000. गलती से ये 100% क्वांटिटी हमारा एग्जिट हो गया है, बट हम अभी भी ट्रेड में होते तो we would have still have 50% क्वांटिटी left. But anyways, we are in profit today again in the second session.
and please subscribe to the channel, share with your friends if you are learning anything from these live videos. Thank you.